Hello everyone, welcome back to my channel. So of course I've shifted to the new home, but still there's a lot of work to be finished. There are so many things that we need in the home. I just realized. तो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ याद आ रहा था. So I thought why not to make a list and just go to IKEA and shop all together. So right now I'm going to IKEA and gonna finish the shopping. Now this is the place where I live. It's a very beautiful residence apartment area. They also have a hotel to it. That's the lobby. So time to go to IKEA and do the shopping. I hope I find good stuff. And then soon I'm going to do the room tour. Oh sorry, the home tour. Okay, see you guys there. मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं इस टाइम पे IKEA जा रही हूँ एंड उसके लिए मुझे कार रेंट आउट करना होता है जब तक हमारी फाइनल कार नहीं आती है. सो आई रेंट आउट कार ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे. यूजुअली आई डू इट फॉर अ वीक बिकॉज कुछ ना कुछ काम तो होता ही है. यहाँ पे अगर आप टैक्सेस लेते हो ना, द नॉमिनल प्राइस वुड बी लाइक 50 dirhams, 80 dirhams, 100 dirhams. दैट्स लाइक वेरी नॉर्मल. ओके, जो कि इंडियन करेंसी में लेट्स से 50 dirhams इज लाइक अराउंड 1100 रुपीज़. तो अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो सो दैट्स ओके. आई मीन डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू स्पेंड. अदरवाइज मेट्रो इज ऑलवेज एन ऑप्शन. ऑल्दो मैंने कभी मेट्रो ट्रैवल किया नहीं है यहाँ पर, बट अगर हम एक रेजिडेंट हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर टेकिंग द कार बिकॉज कुछ ना कुछ काम होता ही है. सो रेंटिंग आउट अ कार इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. यू कैन रेंट आउट फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, दैट्स योर चॉइस, राइट. तो अब मैं IKEA जाने वाली हूँ और दुबई में मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपको व्यू हर जगह दिखता है. मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं व्यूज़ ही देखती रहती हूँ. आई एम स्टिल लाइक सो ऑब्सेस्ड विद ऑल द बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा एंड द एंटायर लाइटिंग इन दुबई. सो ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया, बट मैं फिर से आपको दिखाती हूँ वेयर आई एम. Most of the places you see Burj Khalifa. बुर्ज खलीफा एक्चुअली बहुत जगह से दिख जाता है. एंड दोज हु आर आस्किंग फॉर द होम टूर, मैं जल्दी करूँगी. ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू गाइज द अपार्टमेंट वी हैव शिफ्टेड इनटू. थोड़ा सा एज आई सेड, आज मैं IKEA जाऊँगी. आई शॉप एंड देन आई पुट द स्टफ इन माई होम एंड देन आई मेक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू, राइट. सो I will do it. IKEA is like a toy shop for me. छोटे बच्चे जैसे जाते हैं ना, play area. I love coming to IKEA. So pretty, everything is so well done. See, crazy stuff. It's time to eat. And this is the IKEA Restaurant here. There's still so much of shopping pending, but I'm so hungry. What an amazing system they have. The whole menu is on the display and I just have to take my trolley from here. How cool the trolley is. And we have to put the food on this. So whatever food you want, put it on this. See, this is the tray. After you put everything in this, you come to the counter where they'll bill it and then you go and eat it. Dubai is crazy. And for cold drink, coffee, they have these counters. I have a token that I have to put in. Whatever coffee, press your coffee cup, insert the token. So, insert the token. Insert it. And here is my coffee. Habibi. Welcome to Dubai.
Cool, no? Another day of shopping. I'm going to some more showrooms today to select some furniture and some stuff for home. So I'll see you guys there now. Diva Cafe. Dubai has a concept of sitting outside in every coffee shop. Now I go to Marina Home. Pretty. So pretty. Marina Homes. I've been missing India so much. But here we go. Golgappa in Dubai. Yum. Can't wait to eat. And this is the night view from our home. I just can't explain this in words. Okay guys, see you all next week in the next vlog. Till then, have a good night and bye bye.